This story of valor is of Martyr Lieutenant Navdeep Singh, Ashok Chakra awardee, posted in the Gurez sector along the LOC. He laid down his life fighting terrorists at the age of 26 and was posthumously awarded the Ashok Chakra. Here is Martyr Lieutenant Navdeep Singh's story. मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जोगिंदर सिंह, फादर ऑफ शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्रा। हम लोग यहाँ संत नगर गुरदासपुर में रहते हैं और नवदीप मेरा सबसे बड़ा बेटा था। उसने एज ए अफसर आर्मी ज्वाइन की मार्च 2010 में और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग हुई अफसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ 2010 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਫਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰ ਲਾਏ ਉਹਦੇ। मार्च 2011 के बाद उसकी पोस्टिंग होगी 15 मराठा लाइन में, जो कि पहले कानपुर में थी और मूव होकर वो गुरेज सेक्टर में चली गई। नवदीप उस टाइम 1 महीने की छुट्टी आया हुआ था ट्रेनिंग कंप्लीट करके, तो सीधा गुरेज सेक्टर में चल गया। उधर उसकी जो काम था, उसकी जो एफिशिएंसी थी, उसको देखते हुए उसके कमांडिंग अफसर ने उसको घातक प्लाटून के रूप में नियुक्त किया। नवदीप काफ़ी होशियार था। उसकी एजुकेशन देखी जाए तो डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, उसके बाद MBA की थी आर्मी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कोलकाता से। 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 15 ਮਰਾਠਾ ਲਾਈ 'ਚ ਯੂਨਿਟ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ सब कुछ, तुसी भी मेरे को घूमन आए हो। तकरीबन रात के 12 बजे के करीब 19 अगस्त को जब हिंदुस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी उसमें 17 आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, तो नवदीप ने उनका सामना किया और 2 एम्बुश लगा रखे थे। मैं उस जगह में गया भी हूँ, पूरी जगह देख कर आया हूँ। उधर उसने 2 एम्बुश लगाए और एक में 3 आदमियों के साथ था, बाकी 7 आदमी दूसरी जगह थे। उसको पता चल गया था कि जो किशन गंगा रिवर है वो एक छोटी बोट के थ्रू टेररिस्ट क्रॉस कर रहे थे, लेकिन उसने फायर नहीं किया। उसकी ये प्लान थी कि पूरे टेररिस्ट इकट्ठे होकर आ जाएं और जब मेरे नज़दीक आ जाएं तब मैं फायर करूँगा। तो जब 500 मीटर पर टेररिस्ट आ गए तो उसने फायरिंग शुरू की और उसने अपनी टुकड़ी को पहले ही बता रखा था, सबसे पहले फायर मैं करूँगा, उसके बाद तुम लोग करोगे। जब वो नज़दीक आ गए तो इतना करीब थे, उसके रेंज में आ गए और उसमें से उन्होंने 13 आतंकवादियों को मार गिराया। एक जो आतंकवादी था वो पत्थर के थोड़ी आड़ लेकर छुपा हुआ था। उसने जब नवदीप को देखा भी इसकी 3 मैगजीन इसने खाली कर दिए थे, भी इस जगह से फायर बहुत आ रहा है, उसने उस साइड में फिर होकर नवदीप के ऊपर गोली चलाई।
लेकिन नवदीप का एक साथी जो सिपाही था वो घायल हो रखा था नवदीप पे, उसने उठाकर दूसरी जगह जब किया तो टेररिस्ट ने उसकी लोकेशन पूरी जांच ली और उसके गोली चला दी, नवदीप के सिर के ऊपर लगी। लेकिन नवदीप ने उस आतंकवादी को मार गिराया। तो ऐसे रात का तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था, तो सिर में गोली लगने के कारण काफ़ी खून बह गया था, तो नवदीप शहादत को प्राप्त कर गया। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ 2 ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਵਦੀਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਦੀਪ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, STD ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਵਦੀਪ 'ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਗੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ MH ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਿਬੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। Lieutenant Navdeep Singh was brought to his hometown Gurdaspur the next day, wrapped in the Indian flag in the military convoy. Mourners included people of his hometown, personnel from civil and army officers, and soldiers from his regiment who gave him a guard of honor and the final salute. He was cremated with full state and army honors amid crowd showering flowers and chanting Navdeep Singh Amar Rahe.
नवदीप सिंह 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री घातक प्लेटून के कमांडर के रूप में नियंत्रण रेखा के हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में तैनात थे। 20 अगस्त 2011 को रात लगभग 12:30 बजे आतंकवादियों के दल की घुसपैठ की सूचना मिलने पर उन्होंने स्वयं घात को अंजाम दिया और दोनों तरफ से भारी गोलाबारी के बीच स्वयं आगे बढ़कर 3 आतंकवादियों को नजदीक से मार गिराया। अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए और सिर पर गोली लगने के बावजूद उन्होंने चौथे आतंकवादी को भी मार गिराया। अपने घायल साथी को सुरक्षित बाहर निकालने में उन्होंने अतुलनीय वीरता तथा सखा भाव का प्रदर्शन किया और तब तक फायरिंग करते रहे जब तक कि वे बेहोश होकर नहीं गिर पड़े। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह ने उच्च कोटि की कार्यकुशलता, दृढ़ता और अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों को मार गिराया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह के पिता सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट जोगिंदर सिंह सेवानिवृत्त। शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह के परिजन। सरकार जो आर्मी की साइड से है हमें सब कुछ पूरे बेनिफिट्स मिल गए हैं। जो सिविल में है हमारे एक बच्चे को नौकरी भी दी गई है, छोटे बेटे को। और हमारी ये डिमांड है, ये हमारी इच्छा है पूरे परिवार की, खास करके हमारे पेरेंट्स की, कि किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम नवदीप के नाम पर रखा जाए। हम ये सोच रहे हैं कि किसी जो गुरदासपुर में है सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़कियों का जो स्कूल है उसका नाम नवदीप के नाम पर रखा जाए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो औरत है ये देश का और समाज का ये भविष्य इनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, बहुत डिपेंड होता है। ये सुनहरा जो है योगदान जो दे सकती है। अगर एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो बच्चों को बहुत आगे ले जा सकती है। तो मैं कहता हूँ ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो गुरदासपुर है इसका नाम हमारे बेटे के नाम पर रखा है। ये हमारी आखिरी इच्छा है। सरकार ने उन्होंने एक तो गुरदासपुर विच गेट बनाया उन्होंने नाम पे, गवर्नमेंट कॉलेज का स्टेडियम, मतलब कॉलेज स्टेडियम का नाम रखा नवदीप स्टेडियम। होर असी अपने वास्ते तो असी कुछ नहीं मंगते सरकार को, असी कहने आ कि उन्होंने शहीद के नाम पर कुछ ना कुछ करना चाहिए है। जिद्दां हुण असी कह रहे हैं कि स्कूल का नाम रखा जाए। And joining us at this point is Lieutenant General Kamaljeet Singh, former Western Army commander. We also have Commander Harinder Singh Sikka joining us live. Let me get started with you first, General Singh, Lieutenant General Kamaljeet Singh. The story of Lieutenant Singh, who we were just, showing our viewers, Martyr, Lieutenant Navdeep Singh, who of course is an Ashok Chakra awardee, has shown much bravery, alacrity while he was posted in the Gurez sector, and through his life and through his journey, as we have described, has really shown the heroism that the Sikh community is known for. What would you like to say about the lessons that we as Indians can learn from the bravery that he has shown, the story that we just played out? Thank you to NewsX, and Jai Hind to all our listeners and viewers.
See, firstly, I would like to salute all these brave hearts. We call them martyrs, but correct nomenclature is brave hearts, I think. Now, as regards Lieutenant Navdeep Singh, he was actually to be commissioned in, he was really commissioned in Army Ordnance Corps. And as part of his infantry attachment, he was attached with 15 Maratha light infantry. Imagine, we just heard his father. He was a third generation army inductee. His grandfather and his father had served as junior commissioned officers. His father earned the coveted rank of honorary captain. See the lineage and the family. Studied in Army Public School, Gurdaspur. And I feel very privileged and honored because when I was Western Army Commander, I went to Central Ordnance Depot in Delhi, Kent. And there is this main gate of COD Delhi, Kent, which was called Rohtak Dwar. I said, what is Rohtak Dwar? How is it? Kirby place is nowhere near Rohtak. So why don't you name it after the highest gallantry award winner of Ordnance Corps? And I am proud, I am privileged, I feel honored that we named it after Navdeep Singh. The Dwar is today called Navdeep Dwar. See the parents, what are they saying? They are saying, honor him, enshrine his memory. So heroes like him will never be forgotten. 11 years have gone. All of us, whenever we get chance, I was not connected with I didn't have the honor or the privilege to serve with Navdeep, but the thought came to my mind that we have to honor him. And the main gate of Central Ordnance Depot, and even in the Ordnance School, if you go, there are places named after our braveheart Navdeep Singh. All the young officers, all the trainees, they see it and take inspiration from him. So basically, what values we imbibe here is that he didn't think that he's on a tenure of 3 years. He gave everything to his Paltan, 15 Maratha light infantry. And even when his comrade was injured, he did not think of his safety. He pulled him to safe location and thereby compromise his own location. And see this brave family, this committed family. We are privileged in our country that we have families like this, we have people like this. I salute Joginder Saab, his dad, his Veer Mata, everybody, that village which has produced such a hero. So we can only say that we are indebted forever. And the lessons we have so many: camaraderie, comradeship, bravery, looking after your subordinates, giving everything to your unit. And see his 26-year-old officer who had planned it so well. He eliminated the entire gang of those people who were trying to sneak in. So all in all, thank you for giving me this chance to pay tribute to him, and I salute that hero. Thank you. Yes, Commander Harinder Singh Sikka, come in here on the story, the valor, of course, displayed by Lieutenant Navdeep Singh. What you make of it, what the lessons you draw from it, what we can draw, and also, how this is a story not just restricted to Lieutenant Singh, but holds true of all our brave Sikh soldiers, some of whom have laid down their life, made the supreme sacrifice for the nation while fighting conflicts, while fighting wars, and some whom, of course, are still alive today, but have shown so much valor that we must learn from and we should learn from. So, well, thank you very much for having me here. Pleasure talking about martyrs, honored to talk about them and speak about them and sing glories for the praises and what have you. I have seen Kargil battle from close quarters. I was president of a multinational company, which I've continued to be, but I thought I'll pay back something back to society and my country. Namak khaya hai fauj ka. So I went back and I realized what our youngsters were doing. These are absolutely impossible looking situations, and they were climbing up and they were firing from top down, and still they were achieving their targets, and casualties we had some over 500 people. Having said that,
focusing on Sikhs. We have not really given much to our martyrs, I'm afraid. We have a story of Bana Singh, Captain Bana Singh, who single-handedly occupied Siachen. And I think he's the only one who is surviving Paramveer Chakra. He's alive today. And we promised him something, some land and something like that. He has never once asked for it. He was promised and tall promises given, forgotten. So when I talked to him, how did you achieve, how did you reach there, and so on and so forth, give me some insights. I wanted to know, I wanted him to meet my children and talk to them as to what is bravery all about. Minus 30, 40, 50 degrees temperature, and he's going up and single-handedly did what he did. Today Siachen is with us, and we are not losing manpower and men because of the Pakistani army attack from the higher altitude, is because of that man who has been admittingly given a fair justice, Paramveer Chakra. But we forget our martyrs very, very quickly. This is something which I hate to say this, but I have seen 1984 personally. When I was on a leave to Delhi, I was a young lieutenant then. Congress has been mostly responsible for this. I hate to say this. I pray they learn a lesson sometime in their life. But what has happened to scores of such martyrs? We have forgotten Abdul Hamid, who won Paramveer Chakra in 1965. We have considered and treated our martyrs as expendable commodity. And this is something which is not acceptable. You demean a soldier, you hurt the entire system in that, and that is not something which is acceptable. And we I'm in the corporate sector now. We are trying to look after. I recently was just about a few months ago in Bhopal, and I found a young Captain Martyr's mother, 80 years old mother, surviving. Father had died due to heart attack because of sons who won Kirti Chakra. And guess what? That lady makes pottery, sells them at the end of the year, and gives it on a flag day completely to the army. That's the kind of parents we have. There's a kind of devotion, passion to the country we have. And they do not care whether they get anything in return from the system. Whereas the system, the management, the government, which has to slightly rise up above levels and give them their due. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.